सम्मानित अतिथि मोर आदरणीय शिक्षक शिक्षयित्री प्रिय सहपाठी एवं सम्मानित श्रोतावृंद आज कार्यक्रम सुजोग समग्र विश्व उन्नति नील अर्थनीतिर सुचिंतित परिचालना जहाँकि ओसेन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नेविगेटिंग द ब्लू इकोनॉमी फॉर ग्लोबल ग्रोथ AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अंडरमानी वर्कशॉप उद्घाटन दिवस समस्त को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାର ସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ସୁସ୍ଥିର ଓ ସମାବେଶିକ ବିକାଶର ପଥକୁ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇପାରିବା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ GIET ଗଙ୍ଗପାଟନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ପ୍ରବୀଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଦରଣୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସଚେତନ प्रतिभागी हृदयपूर्वक स्वागत जनाऊँ। आसतु आम समस्ते यही ज्ञान अनुभव और आविष्कार यात्रा सहभागी हो सफलतार नूतन दिग को आरंभ करवा। आमर देशीय परंपरा अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य आरंभ हो दीप प्रज्वलन द्वारा एवं मो सम्मानित अतिथि मानक पवित्र दीप प्रज्वलन सादर अनुरोध करुछि। आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। एबे मो हमर समस्त मान्य अतिथि मानक मंच ऊपर को आसी
ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନୀୟ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ, ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ। ମାନ୍ୟବର ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଦର ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ଭିସି GIET ଗଙ୍ଗପାଟନା ଭୁବନେଶ୍ୱର इंजीनियर रामनारायण सावरकर हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर शांति स्वागत करेंगे। डॉक्टर मैत्रीमयी राव मैडम HOD ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सम्मानीय अतिथि मिस लोका मिश्र ज्ञान को स्वागत करेंगे। Dean Student Affairs Dr. Dilip Kumar Rasar, Professor M.H. Department of Commerce and International Math, Devendra University, Dr. Kumrakant Manisar को पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। Dr. Chandan Kumar Saab, Dean Art। समस्त मान्यवर अतिथिगण एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तथा प्रतियोगी बंधु माने और मोर सहपाठी सहपाठी जातीय संगीत गान करिया पई समस्त को दंडयमान हेबाकु विनम्र अनुरोध। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। GIET आंदोलन गान करिया पई समस्त को दंडयमान हेबाकु विनम्र अनुरोध।
AICT वाणीर संयोजिका डॉक्टर पांचवीबाई राउत मैडम को अनुरोध करुछि जे से इन समावेश को संबोधित करें। शुभ सकाळ आदरणीय अतिथिगण उपस्थित श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय सम्मानीय अध्यापक वृंद प्रिय छात्र छात्रीगण एवं एठारे उपस्थित समस्त मु डॉक्टर मैत्री राव आंतरिक नमस्कार। आज इन सुंदर अवसर में AICT वाणी प्रदान करिथिबा सुजोगर महासमुद्र नील अर्थनीति और विश्व उन्नति विषय आयोजित कर्मशाला रे आपण मानक सम्मुखरे स्वागत अभिभाषण रखिबार सुजोग पाइथिबार मु निजको धन्य मन करूछि। समुद्र जहां आम पृथ्वीर 70% भाग भूपृष्ठ को आवृत करि रखिछि एहा केवल प्राकृतिक सौंदर्य नुहे बरं आर्थिक उन्नति परिवेश संतुलन और मानव जीवन सुस्थायित्वर मूल आधार नील अर्थनीति अर्थात समुद्र संपद व्यवहार समुद्रीय संपद को व्यवहार करी जीवन जीविका रोजगार वाणिज्य और विश्व विकास प्रथम सुगम करना आज एही 21 शताब्दी रे एहार सुचिंतित व्यवहार विश्व अर्थनीति पर सृष्टि करबा एक नूतन संभावना। भारत भली एक विशेष समुद्र तट विशिष्ट देश पाई नील अर्थनीति केवल एक भावना नुहे भविष्यत समृद्धिर पथ मध्य। आज एक कर्मशाला आमको केवल समुद्रर सुजोग गुडी को बुझिबार सहाय्य करिबो नाही
बरं नीଳ ଅର୍ଥନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶର ସୁଯୋଗର ମହାସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେବ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ 60ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀଚରଣ ରଥ ସାରଙ୍କୁ ଉପକୁଳପତି ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। Guest of honor Mrs. Lopa Mishra Jana Ma'am, COO AIHPC Research Center IIT Bhubaneswar को मैं विशेष धन्यवाद जनाऊँगी। आज रिसोर्स पर्सन डॉक्टर तुषार पानी सर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कटक को मैं अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। आमर वाइस चेयरमैन सर या रामनारायण सब सर निरंतर सहयोग पाई मु तंको विशेष धन्यवाद जनाऊँगी। यही कार्यक्रम आयोजन पाई तांकर निरंतर प्रयास एवं प्रेरणा पाई मु आम अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रजीत प्रधान सारंकु मध्य अनेक धन्यवाद जनाऊँगी। डीन स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर दिलीप कुमार दास सर, डीन R&D डॉक्टर चंदन कुमार दास सर, डीन एकेडमिक शिवप्रताप महांती सर, HOD BSS ताराकांत सर, समस्त विभाग मुख्य मानक मध्य मोर आंतरिक धन्यवाद। यही कर्मशाला को कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शिवराम पटनायक सर विशेष धन्यवाद जनाऊँगी एवं अदर कोऑर्डिनेटर्स रत्नमंजरी मिश्रा मैम, आदित्य पात्र सर, समीत सर एवं मोर प्रिय छात्री छात्री मानक मध्य विशेष धन्यवाद जनाऊँगी। यही कार्यक्रम को एक विशेष सफलता परिणत करबा पाई सुजोग प्रदान करिथिबारु मु AICTE को मध्य विशेष धन्यवाद जनाऊँगी। आसंतु आमे समस्त मिसी ई कर्मशाला आलोचना प्रेरणा नै समुद्र संपद को सुरक्षा करी स्थायी विकासर सूर्योदय को स्वागत करी एक नूतन विकासित युगरे प्रवेश करिबा जोंठी आम पाई अपेक्षा करिएछि सुजोगर महासमुद्र। पुणी थरे मु समस्त 85 अतिथि मानकु उपस्थित थिबा समस्त को मोर हृदय गभीरतारु स्वागत जनाऊँगी। जय जगन्नाथ। धन्यवाद मैडम। वर्तमान मु डॉक्टर चंदन कुमार साहू सर DM R&D GIET गंगपाटना भुवनेश्वर अनुरोध करुछि जे सेही समावेश को संबोधित करंतु। समस्त को शुभ सकाल हार्दिक अभिनंदन। सम्मान्य मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रचरण महोदय, उपकुलपति रमादेवी महिला विद्यालय, सम्मान्य अतिथि मिस लोपा मिश्र महोदय, भारतीय प्रजुक्ति संस्थान भुवनेश्वर, अनुष्ठान उपसभापति रामनारायण सर, अनुष्ठान अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रजीत प्रधान महोदय से उपस्थित अच्छा। कर्मशाला संयोजक डॉक्टर मल्टी राउत, विभाग मुख्य स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन विभाग, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, HOD BSS, आज सभा उपस्थित थिबा सम्मानित अध्यापक और अध्यापक वृंद और मोर आदरणीय छात्र छात्रीगण, गांधी व्यावसायिक शिक्षा अनुष्ठान तरफ मो समस्त को स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज गांधी वैश्विक शिक्षानुष्ठान करने एक गौरव क्षण। AICTE प्रशिक्षण शिक्षा अटल वाणी कर्मशाला विषय सुजोग सागर विश्व विकास नील अर्थनीतिर यात्रा आम आयोजन करूँ। नील अर्थनीति सागरीय संपद, मारीटाइम ट्रांसपोर्ट, माछ चाष, सागरीय पर्यटन समग्र विश्व अर्थनीति को नया दिगरे नहीं जाउछि। सुस्थिर विकास किंवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नील अर्थनीतिर गुरुत्व बहुत। गवेषणा और उन्नत दृष्टिकोण यह आम एक विशाल क्षेत्र। गांधी वैश्विक शिक्षानुष्ठान सदा गवेषणा और नवीनतार विश्वास करे। यही कार्यक्रम आम सी प्रतिबद्धतार प्रतीक। चलित वर्ष
गांधी भविष्य विद्यालय AICTE पाखर फोन नंबर ऑटोमेटिक बाणी कर्मशाला पाई अच्छी पाखापाखि 13,50,000 टंकार अनुदान पाई अच्छी AICTE पाखर मु समस्त संपद व्यक्ति को अभाव व्यक्त करुच्ची जो ज्ञान और अनुभव आम सहित बांटे से समस्त अंशग्रहणकारी स्वागत करुच्ची आपण शक्ति अंशग्रहण यह कार्यक्रम को सार्थक कर शेष कही आसता आम समस्ते नील अर्थनीतिर सुजोग को बुझी गवेषणा और नवीनता माध्यम सुस्थिर और समृद्ध भविष्य करने अग्रगामी होगा मत आमंत्रण कर अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन विभाग को स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन विभाग को अविरत प्रयास अभिनंदन जनाऊँगी समस्त को मोर आंतरिकतार सह धन्यवाद। धन्यवाद सर। एवं मो डॉक्टर दिलीप कुमार दास सर डेन स्टूडेंट अफेयर को अनुरोध करुछि जे से एही समावेश को संबोधित करନ୍ତୁ। समस्त को शुभोदय आज आम GIET गंगपाटना अनुष्ठान MBA विभाग तरफ ऑटो पानी वर्कशॉप रे मंचासीन आम समस्त प्रिय आज मुख्य अतिथि प्रणाली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय उपकुलपति प्रोफेसर चंडीचरण तथा महोदय सर्वोपरि आज विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर तुषारकांत एंड महाशय अन्यतम सम्मानित अतिथि मैडम रूपा मिश्रा महाशय सर्वोपरि अनुष्ठान मुख्य आम मुरबी समस्त शुभकांक्षी प्रिय जंत्री आज सम्मानित अतिथि रामनारायण सागर महोदय मंचासीन मुख्य मंत्री राउत महाशय एवं यही महाविद्यालय मौलिक विज्ञान कला विभाग मुख्य प्रोफेसर ताराकांत साहू महोदय एवं मोर सम्मुखें उपस्थित थिबा मोर समस्त सम्मानीय विभाग मुख्य एवं सहकर्मी बंधुगण मंचरे थिबा रिसर्च और डेवलपमेंट डीन चंदन सर डीन एकेडमिक शिव सर एवं यही कार्यक्रम जहाँ भी उत्कृष्ट आम गौरवमणि अति प्रिय छात्र छात्री विशेष कहने अवकाश नहीं एवं अनुपस्थित प्रिय अध्यक्ष श्रीयुक्त सुब्रजीत प्रधान सर यही महाविद्यालय अभ्युदयगत सर्वोपरि समस्त शिक्षक शिक्षयित्री कर्मचारी
ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମର ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହା ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ जो कल्पना एवं से कल्पना मुख्य भूमिका आम जो छात्र छात्री मैंने ग्रहण कर जो विषय वस्तु रही नील अर्थनीति एवं विश्व अभिवृद्धि साहय सर्वोपरि भारतीय जो आम नील समझ उत्स अच्छी से उत्स किपरि उपयोग विनियोग सर्वोपरि भारतर विकास क्षेत्र में यह संस्कृति नील समुद्र अर्थनीति केते पर्यटन मत्स्यजीवी जैव प्रवृत्ति नियुक्त सृष्टि कर विशेष आलोचना आज कर्मशाला जहाँ तथ्य नहीं भारत वर्ष में 2.8 कोटी 3 कोटी पर्यटन मत्स्यजीवी ये समुद्र नील समुद्र अर्थनीति जीविका निर्भर कर समग्र विश्व 70 लाख जल यही उत्स को किपरि संरक्षित कर विश्व विकास को आरंभ कर देश विकास को कमी सर्वोपरि राज्य विकास कर आज कर्मशाला आभिमुख्य धन्यवाद उपस्थित समस्त छात्र छात्री अध्यापक अध्यापिका एवं समस्त गुरुत्वपूर्ण पद शिक्षक सर्वोपरि समस्त अतिथि को पुनर्बार कृतज्ञता जन अभिनंदन जन बड़ वक्तव्य विदाय दूसरी बंदे उत्कल भारत माता की जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। वर्तमान में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट रेवेका यूनिवर्सिटी डॉक्टर तुषार पानी सर को अनुरोध करेंगे से यही समावेश को संबोधित करंतु। Thank you very much. Esteemed Vice Chancellor, Commander University, Professor Chandra, the Chief Guest of the occasion, Dr. Sawant, Honorable Vice Chairman, G.I.E.T. Ghangapatna, Dr. Lopamutra, ma'am from the guest of honor from IIT Bhubaneswar, Maitri Madam, Dean of Campus, Head of MBA Department, all our distinguished faculty members and my dear students and participants for this national level program workshop. The title is Ocean of Opportunity, Navigating the Blue Economy for Global Growth. This is not a new concept. It is not new. Since the inception of human civilization, the human civilizations were started near to sea or rivers. So we are directly involved with water since our beginning, because the origin of human being started from water. Without water we cannot live. 71% of the world is filled with water. Rest 29% we human being exist. As far as the
your ocean economy, sea economy, marine economy. We have coined a new word recently by our Honorable Prime Minister, that is blue economy. We have got red economy, pink economy, yellow economy, green economy, likewise. This is called blue economy, which is focusing entirely on ocean. 10 years back, I was attending an international conference organized by Government of India here in Mayfair, Hotel Mayfair, where we then External Affairs Minister Sushma Swaraj ji, the Defense Minister Manohar Parrikar ji, they all were here to have an international conference where almost all ambassadors and country heads were invited, those who are representing Indian Oceans, countries which are situated in Indian Oceans. So, fortunately, I was a rapporteur of a particular session where all ambassadors were there. There it was discussed that human beings have explored a lot on the earth. We are exploring a lot in the sky. We are yet to explore many things which are underwater. You will be surprised. There are, I think, Professor Chandi, he is a man from botany. I have a little bit idea on botany also. समुद्र पानी भीतर जो अच्छी गुल्म ना सेटा गोटे गोटे भारत महासागर जो सॉरी अच्छी इंडियन ओशन छोट छोट देश वो जगह दे डोंट यूज मेडिसिन जर हेले से पत्र टिके कोन सुबी लगे देबे त जर भल होय मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक्स तापर फिशरी I have a session for 1.5 hours where I will be discussing on ecotourism. So when we are talking of logistic and supply chain management, without ocean you cannot survive. There are two words which are basically predominantly dominated the business world. One is efficiency, another is responsiveness. Responsiveness deals with give what customer wants, what people want to give it. Efficiency deals with how to reduce the cost. So when your natural resources are limited, we are talking of GDP, gross development, growth on the GDP growth, gross product development. We are not thinking about sustainable development. Our GDP has increased many times, but as far as quality of life index, we are far below. Our समस्त गाड़ी बढ़ी है, ऐसी रे रोचो. एक क्लास में जितने पिला बच्चों ने भाई आस्क यू, तो तुम परिवार वा संग साथी कहाँ को कैंसर रे जॉइन चल, बंधु बांधव एक क्लास में आधा पिला कहबे हम जानछु कैंसर है. कारण यदि आतंक हरियर परसेंट रो जीव से लाइन देखले डरियो. हमें कौन डेवलपमेंट करछो हम जानिबा. The food that we take, the color that we use, the chlorofluorocarbon that exists beside the air condition separate. सबू घरे घरे कैंसर है. ठंडा जल में कैंसर हो. So in terms of quality of life index, हमें किसी नहीं. As far as human population is concerned, we have got highest population, 145 crore. We proudly say we have overtaken China. But land is limited. Entire world, when we are talking of international business, maritime business or global growth, three particular words is ruling the entire world. What is socio-cultural similarities? What is economic interdependence? The third one is equation of power and politics. After grabbing the land area, now the big countries, you can say developed nations like USA, Russia, NATO, China, they are trying to grab the sea, oceans. America could have, they are secretly India has why we had a meeting with the Indian Ocean country के साथ why Modi ji started meeting?
because 70% of the crude oil that goes to China goes by Indian oceans. So we have to keep relationship with those nations. If you are talking of industrial development, you have to think about an industry which should be smokeless. Government is saying they will have number of steel plants, we will have number of amount plants, we will have plant, but each दिन गले अपन केवल doctor care. We have exported, you can say more than 70% of the goods to different countries. Doctor care the way we are going for deforestation, अवस्था खराब है जो climate condition खराब है जो एवं आत्मनिक पैटर्न 9 लक्ष 18,000 वर्ष कैंसिल in the name of coal India. So we have to think this generation. We the senior people hardly will have 10 to 15 years of life. We have to think about your generation and you people have to think about that. And who the काम करेगा will work in ocean. That's why see we are talking of so many things. हमें पहले आत्मनिर्भर भारत. We talk about vocal for local products. We talk about Swachh Bharat. We talk about Vikasit Bharat 2047. So if you want to really develop, you want to work in the field of ocean. Because as far as product is concerned, promotion is concerned, when you want to compete in global level, you have to reduce your logistic cost. Recently, Nitin Gadkari has come to Ramesh. He was saying one thing. He advised the chief minister here also. The Manjuji do one thing. Why you are having flood? जो चलता हुआ पानी उसको रोको, जो रोका हुआ पानी उसको चलाओ. You will find there will be no shortage of water any place. There will be the transportation cost will be less. You can compete in global level. एबे जो हमें कहते हैं इकोटूरिज्म कथा कहते हैं seashore. When you focus on something, you will find there will be over tourism. You know, Swachh Bharat is not only cleaning your own toilet or cleaning your campus. If it is a coastal area, you need to clean that. You have to inculcate a habit in the mind of the local people so that they will keep the sea clean. Then it is all about fishing, it is all about extracting oil from the soap, it is a transportation, logistics, supply chain, it is all about cosmetics, it is all about any kind of things. So there is a tremendous opportunity in the field of ocean and below the ocean. You can have so many kind of sports where people have thrilling experience in the ocean. Upon one Indian as a country, suppose I will give example of Mauritius, Thailand, Fiji, Posh, Maldives, Ichland, Charipata Parliament. So people want to see that. Human being is just simple like a nowhere. They love to travel from place to place. So se jaga kichhi nahi, chhot chhot deepa. Sete high speed boat re jibe. But hotel re rahibe. They will see the blue ocean. But chair by your special interest tourism. I will be cycling around the seashore. I will be discussing on those in my technical session. But in a country like India, we should think about how you will make this country develop with the help of ocean by 2047. We can do it. This generation we used to blame the next generation. The young generation has got tremendous potential. Tremendous potential. Only they should be purposefully used or utilized. If you operations indoor, if you think of ladies, ladies regarding Operation Sindoor, 2 young girls, yes, Bhumika Singh, Manachi, or Sophia Quraishi, if you think about the highest bridge in the country, who bridge from the railway bridge, Chennai Bridge, Tawanchike, he was a chief engineer, architect. It is not necessary that they should be from IIT, it is not necessary they should be from top class institutions, from very mediocre colleges. If you have the intention to do, if you have the intention to proceed, you can do it. In technical session, I will go to a discussion.
So never underestimate the power of the youth. The youth can do wonders. So I request all the participants, young generation, a seminar conference is meant for you people. These things will motivate. Not necessarily engineer will work only in the field of engineering. Engineering degree is making you educated. You can be a part of rural tourism. You can be a part of ecotourism. You can be a part of sustainable tourism. Most of the engineers are fortunate. So not necessarily that you will be only engineer. You have got enough scope. So I think in this particular seminar, the students will be immensely benefited. The research scholars will be immensely benefited, and the participants will be immensely benefited. Thank you. I must appreciate the effort of GIET for conducting this type of national, GIET for conducting this type of national level conference. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद सर। प्रिंसिपल डॉक्टर सुब्रजीत प्रधान सर आज कार्यालय कारण आम घर अनुपस्थित अच्छा एवं इंजीनियर रामनारायण सावत सर उपाध्यक्ष GIET गंगापाटना भुवनेश्वर अनुरोध करेंगे दयाकर समावेश को संबोधित। शुभ सकाळ। मंचासीन सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित सहकर्मीगण एवं मोर प्रिय छात्र छात्री, मंच उपरे आजिकार विषय उपरे कथबार्ता आम सौभाग्यर कथा। आजिकार विषय हूँ सुजोग महासागर। विश्व अभिवृद्धि आम नील अर्थनीति को नेविगेट करवा डिस्कसन। प्रथमतः मु आजिकार समस्त अतिथिगण को मैनेजमेंट तरफ अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। जड़े मुसवा पूर्व मोर कक्ष भितर बस कथा होली महिला विश्वविद्यालय उपकुलपति जो आज समयटा बहुत इम्पोर्टेंट से भर भी सी आम किसी समय बाहर कर आम सहित कर्मशाला से आज जोग देइछन्ति। मु बहुत धन्यवाद दूची। एवं ये जो वाणी प्रोग्राम अच्छी AICT प्रोग्राम करिछि या पई AICT को मु बहुत बहुत धन्यवाद दूची। जीवन में बहुत भाग्यवान अच्छी मु किछटा देश बुली देखिछि। स्पेशली एबे ई समय जाइथि दुईटा कंट्री बुली के असली भारी विकसित देश दुईटा, गोटे होछि साउथ कोरिया और गोटे होछि जापान। हमर एठी को करछे ना आमे पिला जन्म हो ताकू अ शिखेवा पूर्व ABCD प्रथमे शिखेवा आरंभ करछे। सेठी बोधे ऑलमोस्ट 80% लोक मानू इंग्लिश जना न थाए। बहुत खंड खंड इंग्लिश कहती निज भाषा कहती। और ये जो भाषा को प्राधान्य दिया बर्तमान स्पेशली जो आम बर्तमान गवर्नमेंट अच्छी से भाषा को प्राधान्य देकी इवेन इंजीनियरिंग कहतु कि मेडिकल कहतु से कहते ना आजिकल या आम पाठ पढ़ा को ओडिया पढ़ेगा कि तेलुगु पढ़ेगा कि तमिल पढ़ेगा। ये जो प्रोत्साहन दौरान बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट। ये कौन हम ना आम अधिका लोक मान
इंक्लूड करिया पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलियो जो माने हमरो फाउंडेशन जारो फाउंडेशन टिके वीक होची स्पेशली इंग्लिश से माने आउ टिके अधिका प्रोत्साहन पाइबे ए सब जिंस रे तुमकरी ई भलिया बाणी प्रोग्राम का एआईसीटी द्वारा करवाटा बहुत वेलकमिंग मु हमरो प्रोफेसर डॉक्टर मैत्री राउत मैडम को बहुत अभिवादन जनाउची से अप्लाई कले एंड धन्यवाद दूची फॉर गेटिंग द ग्रांट फ्रॉम AICT फॉर doing this program अनिशा जहाँ कहले जे हमरो वर्तमान रो जो गवर्नमेंट अछि से मोदी सर पूछो जे इटा गोटे नील अर्थनीति यार प्राधान्य काहे रहबा दरकार हमें स्पेशली ओडिया लोक पइला नुवा जिंस नुह गोटे मास परे कोन मास आसीबो कार्तिक मास कार्तिक पूर्णिमा दिन हम कोन करछे बोईत वर्ष होचे नहीं तो बोईत रे जाई वाणिज्य करडा हम नहीं नुवा जिंस नुह शह शह हजार हजार वर्ष धरि हमरो ओडिया लोक वाणिज्य करे आछंती मझरे आमे टिके दबी जाइले आउथरे आमे ऊपर को जिबा दरकार भारत रो सेप एमती आईची ए जो 70% पानी अछि पृथ्वी पृष्ठ रे हमरो कोस्ट लाइन 11000 किलोमीटर अछि वर्तमान सुधा ओनली 13 टा ही मेजर पोर्ट अछि आउ छोट बड़ हे कि आउ 200 टा पोर्ट अछि हम जदी अलगा देश को पहुंचवार अछि स्पेशली हमर जो 140 कोटी लोक अछंती वी शुड बी सार्जन कहले हम के फोकस करियो यंग लोक माने मोर फोकस करियो पड़ो फॉर यू नो कमिंग विथ माने नुवा नुवा आईडिया सहित आसी कि हम प्रोडक्शन हमर बढ़ेबो पड़ो हम प्रोडक्शन बढ़ेबे हम याकू बाहर को पठाउ पड़ो सो दैट आउ जो 600 कोटी अछंती से माने हमरो प्रोडक्ट को यूज करबे सेटा करिया पई सबरु बड़ रास्ता होची सामुद्रिक तो मु भावुची आजिका ये जो प्रोग्राम रे जो माने भी अभिवाद माने स्पीच देबे आपण माने बहुत लाभजनक हबो मु डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कृतज्ञता जनाउची ये प्रोग्राम पई अगेन समस्त बाहर कॉलेज रो किबा देश रो जो माने भी हम ओडिसा रो स्पेशली जो माने प्रोग्राम रे आदि जुड़ी हेचंदी ताकू मध्य कृतज्ञता जनाउची GIET गंगापाटना तरफरु जेमती समुद्र सीमा नहीं हमर मध्य चेष्टा रे कोनोसी सीमा रहबा न रहबा दरकार सो दैट हमर देश को हमें आगु बारु बढ़ेबा धन्यवाद धन्यवाद सर एवं मो अनुरोध करूची सम्माननीय अतिथि सुश्री लोपा मिश्र जाना मैडम COO AICTE रिसर्च सेंटर IIT भुवनेश्वर अनुरोध करूची जे से ए समावेश को संबोधित करंतु नमस्कार Namaskar everyone and very good morning. So, respected dignitaries on the dais, esteemed guests, dear academicians and my young friends. So, sir, it's actually an honor to be here today at the inaugural ceremony of AICTE VAANI workshop on oceans of opportunity, navigating the blue economy for global growth. And I must say, sir, at the very outset, it is a very congratulatory effort on the department, on behalf, I mean, it's on part of Department of Business Administration for curating such a very timely and
future-oriented theme. Now, the blue economy is no longer a peripheral subject. Like Sir mentioned, it was and it still is at the very heart of global sustainability, innovation, and inclusive growth. The blue economy, when we talk about that, we are not just talking about the sea or the ocean, but we are talking of the future of humanity itself. You know, like Sir mentioned that it's 70% of our planet. Now the oceans cover 70% of our planet. They produce 50% of the oxygen that we breathe and support livelihoods of up to 3 billion people. The World Bank has estimated that the blue economy grows at a annual rate of 1.5 trillion, and the Organization for Economic, this OECD. I'm just forgetting the name. Cooperation and Development, I guess. It projects that this growth would rise to 3 trillion $3 trillion by 2030. So this is not just an economic opportunity, but a right call to innovate, collaborate, and to act responsibly. And if we can talk about the opportunity before us, the Vice Chairman Sir mentioned, India has a very environmental advantage, be it its coastline, be it the ports, and also the exclusive economic zone of around 2.3 billion square kilometers. It means that we are not just a land power. We are a maritime nations with oceans of opportunity waiting to be explored. The initiatives like Sagarmala or Maritime India Vision 2030 or Deep Ocean Mission, they show our intent. But the real drivers are people like you, the students, the researchers, entrepreneurs, innovators, and the leaders of tomorrow. What is happening around the world? If we can speak of Norway. Norway has transformed its fisheries into a very high-tech aquaculture, making salmon farming both profitable and sustainable. UK is a global business leader in offshore wind energy. It's already generating somewhere around 1.4 gigawatt of energy that powers millions of homes. Your visit to South Korea and Japan must be an example to this, where they are exploring marine biotechnology. They are discovering life-saving compounds from ocean organisms. Maldives thrives on eco-marine tourism, and this proves that the conservation and prosperity can coexist. When we come closer home, Chilica in Odisha has become a model of ecotourism. It balances biodiversity as well as community livelihoods. But when we talk of all these growths, the challenge is: are we responsible? It also reflects that 90% of the global fish stocks are fully exploited or overexploited. 8 million tons of plastic waste goes into the ocean, and the rising sea levels, the floods that we just are seeing in Himachal, these rising sea levels threaten the coastal communities across the world. So, the blue economy, it's not just about extracting more, but it's you have to innovate better. You have to be very responsible. You have to use science, technology, entrepreneurship to ensure that this growth is sustainable, inclusive, and yet it is just. And so, why this workshop matters is because this will give you, institutions like this, they play a very pivotal role. These workshops like this, they build that awareness of the economic, social, and the policy dimensions of blue economy. What I would suggest is, if we can encourage entrepreneur thinking in these growing sectors, and like marine logistics, renewable energy, ecotourism, biotech, this will inspire you, the leaders, who can balance profit with purpose and innovation with responsibility. So, my dear students, the future will not be built by those who play safe, but it will be built by those who are willing to take risks, who are willing to explore the uncharted waters, and that too think very boldly. So there was one very famous anecdote by a great explorer. The homework for you is to go and find out who that explorer was. The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever. So today, let me say you that let this cast of spell
this, let it cast its spell on your imagination. Let the waves of knowledge you gain here, it pushes to dream bigger, and the tides of innovation you ride here carry the global impact. So the next days, I guess, will not just be about listening to people speaking, but you have to envision, you have to envisage. Who knows? I mean, perhaps this workshop could motivate you to become startup, to form startups who can create global impact. Be enterprising, and you can create next breakthrough in marine technology or offshore renewable energy or any sustainable logistics. That might put India at the forefront of global economy. With that, I congratulate all of you and all the best for the coming days. God bless you. Thank you so much. धन्यवाद मैडम। एवं माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंडी चरण राज सर, वाइस चांसलर रमादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, अनुरोध करुछि जे से एही समारोह को संबोधित करु। धन्यवाद मां। सुबह सकाल रे समस्त को मोर नमस्कार। A very good morning to one and all present over here. Guest of honor of this occasion is Mr. Jena from IIT Bhubaneswar. Resource person of the day, my elder brother life, Dr. Ghangapatna from Bhubaneswar University. Engineer Ramnaran Sabat, Honorable Vice Chairman GIET. Dr. Dilip Kumar Das, Dean Student Affairs. Chandan Kumar Sahu, Dean R&D. Professor Tarakan Sahu, Assistant Professor HOD Department of BSH. Authored as esteemed faculty of GIET, participants, and my dear students. At the outset, I must congratulate the Institute GIET for holding this workshop on ocean opportunity, navigating the flow economy for global growth. At the same time, I thank again the organizers for giving me an opportunity to stand before you all and speak few words. For me, I think after listening to all the dignitaries of the dais, there is anything left to speak. However, I will share my personal opinion on this topic, ocean of opportunity, navigating the blue economy for global growth. Friends, let us ask one question. Why AICT has sponsored this project or workshop for the scholars of business administration? It's a big year and year. Let's ask this question to ourselves first. When I asked this question, I got the answer that you all are the future managers and leaders of the ever-changing world. Without management, no sustainability can sustain. That's why probably AICT has given this opportunity of learning to the scholars of business management. Friends, when we think of economy, our minds often jump to bustling cities, financial markets, tech hubs, but beyond the land, we stand on lies a vast, unexplored frontier, the ocean. From our childhood, we know that 70% of the planet is covered by ocean. This is where we can say the concept of blue economy comes into play. Simple. I was talking to Professor Pani that he was telling me if in a seashore, even if you sell your peanuts, that is blue economy. That gives you economy. I mean, Puri beach, it's simple. You see the vendors. Is it not economy strengthening to our economy? So that is where we can say that ocean itself is a ocean economy. The blue economy refers
to the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs while preserving the health of ocean ecosystem. When we think of economy, we always forget about balancing our ecosystem. That can come to later on. It's not just about fishing or shipping. It spans across renewable energy, tourism, biotechnology, marine transport, coastal development, and even ocean-based carbon capture technology. Today, we all are, entire world is after carbon emission technology. Friends, if I am not wrong, for business students like you, the blue economy represents $1 trillion opportunity waiting to be tapped. Reports suggest that by 2030, ocean-based industries could contribute more than $3 trillion annually to global GDP. This makes it one of the fastest growing sectors for innovation and investment. If you see ocean, when you talk about ocean, just I am giving a small example to my students. How many of you have gone to Puri Sea Beach? Please raise your hands. Okay. Can you tell me the sea that you see, where it ends? In front of your eyes, have you seen? Could you imagine? जदि स्वर्गद्वार पट बीच में छिड़ा हवा समुद्र को देखिबा कोठी सबठी जानि पारुछे so ocean itself is a ocean, that's why it is called ocean opportunity, or we can say blue economy. Opportunities we can say, we can develop entrepreneurship, new ventures in aquaculture, ecotourism. Professor Pani will be talking on that. He was telling of, and you can say most importantly, today we have the advanced branch, that marine biotechnology. I'll tell you here that the government of Odisha itself, Science and Technology Department, had launched a program called Marine Biotechnology. Any of you faculty members or research scholars, you can apply for small projects there in marine biotechnology. Then innovation and technology, drones of ocean mapping. It is simple. You can say when you talk about innovation and technology in a blue economy, it is just like an ocean. Never-ending technology, I can say. And sustainability and CSR, aligning business with the global sustainability goals. SDG 14, life below water. It says, what is there? Life below water, we have to exploit. Now we have exploited, we know that if I am not wrong, all of you will accept me that yes, we human beings are the most selfish animals in this world, or on this earth, you can say. And we have exploited everything, whatever possible, for our benefit, or you can say for our sustainability, or you can say for our economy. But now time has come, nothing to be explored now, rather than we have to see below water what is there. That is, we are so selfish, we don't want to also leave what is left behind the water, below the water. We have to exploit that for the sustainability. Oceans are already under stress from overfishing, pollution, and climate change. The challenge for your generation of leaders will be to design business models that are profitable, inclusive, and sustainable. So that is, we can say that we have opportunity on this. Then we have lots of challenges. But friends, I will tell you, there are certain things that India is flourishing on this ocean exploitation, or I can say ocean blue economy. I am a member of this program done by CSIR, Government of India, that is drugs from sea. There is a big project running that drugs from the sea. That is the corals, or you can say other aquatic animals that are associated with different microorganisms. Now people are exploiting those corals from bottom of the sea with the microorganisms and thinking of for newer drugs. And we can say that your CSIR Lucknow has success for, as Sir was talking about, Pani Sir was talking about cancer, some anti-cancer drugs. Then green logistics shipping, as I told, okay. Then most important is your marine management. So when we think that yes, these are big things that yes, we can say it is like ocean like and we need to exploit, then we can say
in front of us, we have many challenges. Friends, you will agree to me that the world has two big problems. Can anybody say? What has, dear students, what is facing two big problems now? That is also related to ocean. If I say it is 2P, population and pollution. So similarly, when you exploit ocean for your benefit, pollution will be there. So therefore, we must take care of the environmental threats to this ecosystem. Then, when you talk about this environmental threat, recognize the threats of pollution, that plastic and oil, ocean acidification, overfishing, climate change, which degrade marine health and diminish resources. Friends, only we should not talk about our sustainability. At the same time, we have to think the stability and sustainability of the ocean when you exploit the blue carbon. But I can say that when you think of this workshop, different concepts, different logics, and different opportunities will be open for these young brains. And from that, I expect that the takeaway message will be the blue economy is just not a niche, it's the next wave of globalization. Whether you become entrepreneurs, corporate leaders, or policymakers, the decision you make can either exploit or sustain these vital resources. The future of the global economy will be written not only in boardrooms but also on the waves of the ocean. We hope it should happen for the sustainability of the world. With this note, I once again thank all the organizers of GIET for giving me an opportunity to stand before you all. I wish the 3 days program a success, and I am confident the deliberations that will be taken place by the learned speakers or the resource persons, definitely all of us will be benefited, especially my young friends. With this I remain. Thank you all. Namaskar. Bande Utkarajal. धन्यवाद सर. Felicitation of the dignitaries.
ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଚଓଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ବିଏସଏଚ ପ୍ରଫେସର ତାରକନ ସାହୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल आदरणीय सम्मानित उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय अध्यापिका वृंद, और प्रिय छात्र छात्रीगण, आंतरिक नमस्कार। मु अध्यापक तारकन साहू आज कर्मशाला सुजोगर महासमुद्र नील अर्थनीति और विश्व उन्नति यह कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन कर अवसर हेतु निज धन्य मन कर महासागर विशाल आशा आकांक्षार संभावना पृथ्वी अर्थनीति पृथ्वी राजनीति ये सब समस्ते संश्लिष्ट समस्ते जड़ित ये कर्मशाला विभिन्न दिग को आम उन्मोचन कर प्रथम AICTE प्रोग्राम को निश्चय AICTE धन्यवाद अर्पण करी। प्रथम आमर आज मुख्य अतिथि श्रीयुक्त चंद्रचरण प्रोफेसर उपकुलपति रमादेवी महिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय मोर हृदय धन्यवाद ये निजर मूल्यवान समय आमको प्रेरणादायी उद्बोधन देते मुख्यतः गोटे बिंदु मुझे कहबी पुरी समुद्र अर्थनीति पुरी बासिंदा मूल बासिंदा एक्चुअली निहाती देखी हाँ पुरी लोक मैंने किपरि समुद्र और पुरी मंदिर निर्भर बोधे पुरी समुद्र नथिले पुरी आज एत उन्नत होई नथा वक्तव्य नील अर्थनीति और विश्व उन्नति विषय निश्चित आमको प्रेरणा देती। मोर विशेष कृतज्ञता और सम्मानीय अध्यक्ष जी उपस्थित नाती डॉक्टर प्रधान सर धन्यवाद अर्पण करी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और FPC गवेषणा केंद्र मुख्य लोकमेश्वर जहाँ धन्यवाद देवी से बहुमूल्य समय मु धन्यवाद देवी मुख्य अध्यापक डॉक्टर पाणी सर रेवेन्यू यूनिवर्सिटी वक्तव्य ग्लोबल पॉलिसी एंड इकोनॉमी केमती महासागर महासमुद्र निर्णय करुच्ची मोर आंतरिक धन्यवाद आपको धन्यवाद देवी आम पुरखा वैषयिक महाविद्यालय इंजीनियर रामनाथ सावत सर को जी सब ये कार्यक्रम प्रोत्साहन दे प्रेरणा आज प्रोग्राम भी कर सब मोर अभ्युदय धन्यवाद देवी गवेषणा केन्द्र आम विश्वविद्यालय गवेषणा केन्द्र मुख्य डॉक्टर चंदन पाल साहू सब प्रेरणा रही
कार्यक्रम को सफल करने मु धन्यवाद देवी डीन स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर दिलीप कुमार दास को ये सब हमारे पक्षर अच्छा कार्यक्रम सफल करने निश्चित धन्यवाद देवी संतकृत व्यवसाय प्रतिष्ठान विभाग समस्त अध्यापक अध्यापिका और छात्र छात्री मान मो समस्त सहयोगी को धन्यवाद जो मानकर विराट परिश्रम आज ये कर्मशाला परिकल्पना ही बना आसतु आम समस्त आलोचना प्रेरणा नहीं निड़ अर्थनीति को विश्व उन्नति में आम अवदान को सुनिश्चित करवा सागर अशेष अशेष संभावना क्षेत्र चलो आम समस्ते खोजी कर धन्यवाद।